Hello everyone, welcome back to your friendly study hub. If you are new here, smash that subscribe button. It literally takes 2 seconds and it means the world to me. So today we are going to discuss about educational research, that is from the paper MES016, and today we are going to cover unit 1, 2 and 3. But don't worry, this is not going to be boring textbook stuff. I'm going to break it down with examples you will actually relate to, because honestly, educational research is happening all around you. Every time a teacher wonders whether online classes work better than like in offline classes, or when a school tests a new teaching method, that is educational research in action. So let's dive in and discover why this stuff actually matters. So coming to what educational research means. All right, let's start from the very beginning. The word research comes from two words, re meaning again and search meaning to find out. So research literally means to search again. Now here is the thing, why would you search again, right? Well, imagine you are looking for your favorite restaurant in the city. You find it once, right? मतलब कि अगर आप अपने शहर में एक आप अपना फेवरेट रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो एंड आपको एक बार मिल गया, बट नाउ यू वांट टू गो बैक एंड फाइंड इट अगेन, और मे बी यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, लाइक देयर न्यू मेन्यू, देयर कस्टमर रिव्यूज, व्हाई दे आर सो पॉपुलर, और मे बी यू जस्ट वांट टू मेक अ फूड ब्लॉग बनाते हैं ना ब्लॉगर, आप देखे होगे यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे. सो that is the idea behind research. It is about searching, investigating, and discovering more. The Encyclopedia of Social Sciences defines research as the manipulation of things, concepts, or symbols for the purposes of generalization to extend, correct, or verify knowledge. In other words, research is about extending knowledge, correcting knowledge, and verifying knowledge. Right? You have to remember. आपको याद रखना है. Extending knowledge. एक minute. एक्सटेंडिंग नॉलेज का मतलब होता है कि एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू व्हाट वी ऑलरेडी नो. करेक्टिंग नॉलेज होता है कि अगर कोई मिस्टेक्स या फिर मिसकंसेप्शन है उसको फिक्स करना होता है. देन होता है हमारा वेरीफाइंग नॉलेज, जहां पे कि वी हैव टू प्रूव दैट वी बिलीव इन व्हाट वी बिलीव इज एक्चुअली ट्रू. अगर आप बिलीव कर रहे हो कि आपका एग्जाम अच्छा जाने वाला है, सो यू हैव टू प्रूव दैट, राइट? Now, when we talk about educational research, specifically, we are talking about applying scientific and systematic methods to study problems in education. Think of it like this. Teachers notice that some students learn better with visual aids, others with hands-on activities. Educational research investigates questions like this to improve teaching and learning. Here is something cool. Research is actually an acronym. Let me break down that what each letter stands for. Just a minute. Yeah, here it is. So R means rational way of thinking. You approach the problem logically and not emotionally. E, expert and exhaustive treatment. You dive deep and really understand the subject. A comes for search and solution. You look for answers and practical solutions. And then exactness. Exactness का मतलब होता है कि वो your work is precise and accurate. A for analysis, जिसका मतलब होता है you examine data carefully and break it down. R for होता है relationship of facts, मतलब कि अगर आपको बहुत से अलग अलग सोर्सेस से आपको इंफॉर्मेशन मिली या फिर डाटा आप कलेक्ट किया हो, then you have to connect different pieces of information. C for critical observation and constructive attitude. You question things and build something better. H comes for honesty and hardworking. You are truthful and dedicated to your work. So when you put it all together, research is not just randomly collecting information. It is a careful, thoughtful, honest process of discovering truth. ठीक है? फिर आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च क्या है. ठीक है, अच्छे से समझना. यहाँ पे हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, जो कि जेनरिक है. फिर और एक स्लाइड में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, जो कि थोड़ा सा स्पेसिफिक है. पहले जेनरिक से बात करते हैं. पहला होता है पर्पसफुल, साइंटिफिक, सिस्टमेटिक एंड प्लान. ये बहुत ही ज्यादा प्लान होता है, स्ट्रेटेजिक होता है. एम्पिरिकल डाटा एंड ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंसेस. हम एक चीज को खुद उसको एक्सपीरियंस करते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस हम उसको ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है. फिर रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव. ये बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव होता है एंड रिलायबल डाटा से ही हम रिसर्च कर सकते हैं. रिगरस एनालिसिस, बहुत ही रिगरसली, बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में एनालिसिस किया जाता है यहाँ पे. जनरेट न्यू नॉलेज एंड डिस्क्राइब फेनोमेनल
एंड फिल द गैप्स। जैसे कि अगर आप किसी भी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो, अगर आप रिसर्च कर रहे हो कि कोविड-19 के बाद जो टेक्नोलॉजी हम एजुकेशन में यूज़ कर रहे हैं, उसमें से स्टूडेंट का आउटकम इम्प्रूव हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इस टॉपिक पे पहले भी ऑलरेडी बहुत से रिसर्च हो चुके हैं। आपको क्या करना है, आपको लिटरेचर रिव्यू करना है, वो हम बाद में पढ़ेंगे स्टेप्स। आपको जैसे कि अगर 10 रिसर्चेस हो चुके हैं, आपको 10 रिसर्चेस पढ़ने हैं, फिर आपको देखना है कि ऐसा क्या चीज़ है जो कि उन रिसर्चर ने अपने रिसर्च में ऐड नहीं किया है, ताकि आप उस गैप को फिल कर सको अपने रिसर्च में, ठीक है। फिर आता है हमारा स्कोप। ओके, पहले हम साइंटिफिक मेथड की बात कर लेते हैं। So here is where it gets interesting. How do researchers actually do research? They follow something called the scientific method. So there was this person, Barry F. Anderson, a prominent researcher. He defines it beautifully. Scientific method is a set of rules comprising operational definition, generally controlled observation, repeated observations, confirmation, and consistency. ठीक है, लेट मी ट्रांसलेट दैट इनटू प्लेन इंग्लिश। द साइंटिफिक मेथड इज बेसिकली अ रेसिपी, ठीक है। रेसिपी आपको पता होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट एंश्योर्स योर रिसर्च इज रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जहाँ पे कि हमें पता चलता है कि जो रिसर्च है वो रिलायबल है एंड ट्रस्टवर्दी भी है। Imagine you are baking a cake. You can't just throw random ingredients together and hope it turns out good, है ना। आप चिली वगैरह, चिली फ्लेक्स, मेयो, ये सारी चीज ऐड करके आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका जो आउटकम आएगा बहुत ही अच्छा आएगा। यू फॉलो रेसिपी, मेजर थिंग्स केयरफुली एंड इट if it works, you can make the same cake again and again with the same results. That is what the scientific method does for research. So here are the key principles that makes the scientific method work. Okay, हाँ. So first is replicability. This is huge. Your research must be repeatable. If someone else follows your exact same steps, they should get similar results. It is like if I give you my cake recipe and you bake it, you should get a cake that tastes like mine. This proves your findings are not just a lucky accident. Next आता है हमारा precision. You need to define everything very clearly. If you are studying whether positive feedback helps students perform better, you can't just say positive feedback. You need to define exactly what that means. Does it mean saying good job or writing encouraging comments? This clarity is crucial so other researchers can understand and test your work. Next आता है हमारा falsifiability. Here is an interesting one. A scientific theory must be stated in a way that it can be proven wrong. ठीक है? For example, मैं आपको example देती हूँ कि students learn better with music. It can be tested and potentially proven false. But a statement like teaching is an art can't really be proven wrong. It's too like very generic. It's there is no fact behind it. Okay, science thrives on the ability to challenge ideas. नेक्स्ट कमिंग पार्सिमनी, ऑल्सो नोन एज ओकम्स रेजर। इसको याद रखना है, यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर सेट में भी आ सकते हैं। पार्सिमनी को हम कहते हैं ओकम्स रेजर। व्हेन यू हैव मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस फॉर समथिंग, यू चूज द सिंपलेस्ट वन दैट मेक्स सेंस. Don't overcomplicate things unnecessarily. If students do better with regular breaks and also better with snacks, and both explain the improvement, but the snacks are provided with the breaks, you don't need two explanations. One explains it all. ठीक है, फिर आता है स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड. नाउ लेट्स वर्क थ्रू द एक्चुअल स्टेप्स रिसर्चर्स फॉलो. दिस इज वेयर द मेथड बिकम्स कंक्रीट एंड एक्शनेबल. पहले आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. Everything starts with a problem or a question. A teacher might notice, hey, my students seem more engaged when I use videos instead of just lectures. That is the problem, or rather the question that needs investigating. Then real world example क्या हो सकता है? Let's say you are a school principal and you notice that students who eat breakfast perform better on tests. That is your problem statement. You know, like you want to know if breakfast really makes a difference. फिर आता है हमारा formulation of hypothesis. Now that you have identified the problem, you make an educated guess or hypothesis about what you think the answer might be. Going back to our breakfast example, your hypothesis might be students who eat breakfast will score higher or standardized tests compared to students who don't eat breakfast. Notice how specific that is. You are not just guessing, you are making a testable prediction based on what you have observed. फिर आता है हमारा collection of data. This is where you roll up your sleeves and actually gather information. You might conduct surveys, do observations, run experiments, or analyze existing data.
In our breakfast example, you could track 100 students for a semester. You record who eats breakfast and who doesn't, and then you compare their test scores. Different ways to collect data include surveys and questionnaires, direct observations like watching what actually happens, interviews asking detailed questions, experiments, testing under controlled conditions, analyzing existing records like looking at past data. Next step is testing of hypothesis. Now you analyze all that data you collected. Do the numbers support your hypothesis or not? In our example, you compare the average test scores of breakfast eaters versus non-breakfast eaters. Do breakfast eaters score higher? By how much? Is the difference significant or just a coincidence? This is where statistics and careful analysis come in. You are not just eyeballing the data, you are examining it rigorously. Last step, conclusion. Based on your analysis, you draw conclusions. Your hypothesis was either supported or it was not. Maybe you find, yes, students who eat breakfast score an average of 8 points higher, or maybe you find actually breakfast does not make a difference in test scores, but it does improve attendance. The key is being honest about what your data actually knows, even if it is different from what you expected. So why this matters, like real world, here is the thing, understanding the scientific method is not just academic, it helps you become a critical thinker. When someone claims learning languages make you smarter, you can ask, what is the hypothesis? How was that tested? Can it be repeated? समझ रहे हो कि अगर मतलब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये साइंटिफिक मेथड? अगर आपको कोई बोल रहा है कि लैंग्वेजेस, जैसे कि अगर आप ज्यादा लैंग्वेज सीख रहे हो तो आप ज्यादा स्मार्ट बनोगे, तो आप उनको क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या हाइपोथेसिस है, किसके बेसिस पे आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो, क्या आप इसको टेस्ट किए हो, कितने बार टेस्ट किए हो, कितने बार रिपीट किए हो. सो teachers use this, doctors use this, businesses use this, even your favorite app developers use research methods to figure out what features actually work. ये हो गया. Then we are, so since we're talking about scope of educational research, the scope is very dynamic. You can say it varies across so many fields like educational psychology, educational philosophy, teacher education, distance education, educational sociology, right? Uh, okay, one more slide also we left. This one is complete. Okay. Next, coming to scientific method completed, characteristics, types of scientific method. Okay, this is the important one. Research design. आपको इसको अच्छे से समझना है. Confusion बिल्कुल भी मत रखना अपने दिमाग में. मैं इसको अच्छे से clear करूँ. Research design is of three types: historical, descriptive, experimental. Right? Research type is also of three types: fundamental, applied, and action. Approaches of research: quantitative, qualitative, and mixed is divided into four categories: exploratory, explanatory, embedded, and triangulation. मैं इन सबको नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि हमारा नेक्स्ट यूनिट जो है वो अप्रोचेस है, वहां पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. बट टिल देन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. रिसर्च डिजाइन, अगर आपको कोई पूछता है रिसर्च डिजाइन क्या है, तो याद रखना हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल. रिसर्च टाइप क्या है? फंडामेंटल, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च. अप्रोचेस में क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स्ड आएगा, क्योंकि नॉर्मली यही होता है. अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च, like people, students also answer ki qualitative, quantitative and mixed. No, these are the approaches. If someone asks you what are the design, आपको ये नहीं जवाब देना है कि फंडामेंटल, अप्लाइड एंड एक्शन. डिजाइन का मतलब है हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल. ठीक है, कंफ्यूजन मत रखना इस चीज को लेके अपने दिमाग में. And okay, that is the essence of educational research, my friends, from identifying a problem to forming a hypothesis, collecting data, testing it, and drawing conclusions. It is a systematic, honest way of discovering truth. If this video helped you understand research better, please hit that like button and subscribe for more educational content that actually makes sense. Drop a comment below. Tell me a research question you are curious about. How does your school learn? What works, what does not? Thank you so much for watching, and I will see you in the next one. Keep questioning, keep learning, and remember, the best learners are always curious. Have a good day, everyone.